Hi students, good afternoon. Welcome to the session with Learn Fatafat. So करते हैं chapter structure of the atom की बात. So this is the chapter number 4 from your science textbook, यानी कि class 9 CBSE board की textbook से ये है chapter number 4 in your term 2 portion. तो this chapter we have finished, explanation हो गया है, सारे topics हमने समझ लिए हैं. And as we always do, after completing the chapter हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज. सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. सो आर यू रेडी? चैप्टर आई होप यू हैव कंप्लीटेड, इसको पढ़ लिया होगा आपने, एंड दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस जो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड फॉर मोर सच प्रैक्टिस, ऐसे ही और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑन द लर्न फटाफट लर्निंग ऐप. तो इसको आप डाउनलोड कर लो फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और एल्स फ्रॉम दिस वीडियो द डिस्क्रिप्शन. इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, यू कैन क्लिक ऑन दैट ऑल्सो एंड डाउनलोड द लर्निंग ऐप. और इस लर्निंग ऐप को क्लास 1 से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं. उनका स्टडी मटेरियल यहाँ पे है. बोर्ड्स भी अलग अलग हैं. तो जस्ट रिमेंबर आफ्टर यू डाउनलोड दिस ऐप, तो अपनी जो है क्लास, आपका क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की कौन सी क्लास है वो आप सिलेक्ट कर लो. ऑल्सो सिलेक्ट द बोर्ड, वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड और सम अदर स्टेट बोर्ड. ये दो चीजें सिलेक्ट कर लोगे तो यू विल गेट द रिलेटेड स्टडी मटेरियल. ऑल्सो यू विल गेट द एनिमेटेड वीडियोज फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में. एंड दीज एनिमेटेड वीडियोज आर वेरी स्मॉल, लाइक अराउंड 5 मिनट्स का एक वीडियो है. ओके, तो इट्स वेरी स्मॉल बट यू विल अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक बिकॉज दिस वीडियो इज वन टॉपिक वन वीडियो. तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो आई होप यू विल मेक गुड यूज ऑफ आवर लर्निंग ऐप. एंड कुछ भी आपका फीडबैक या सजेशन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So let us start with the question answer practice. So just to revise, ये थे वो 4 मेन टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं. ओके, तो चार्ज पार्टिकल्स. सबसे पहले we started structure of the atom में. What is an atom made up of? तो starting में it was found that they were made up of only charged particles, positive and negative particles. First they didn't know about the neutron, जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसके बारे में नहीं मालूम था. After that atomic models में we saw 3 main atomic models, जिसमें ये पता लगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं एटम के अंदर. ओके, सो इन एटॉमिक मॉडल्स वी हैव स्टडीड जे थॉमसन का प्लम कोडिंग मॉडल. देन वी हैव डन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का देखा हमने. एंड देन वी सॉ बोर्ड्स मॉडल्स. ओके, देन हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी, ये पढ़ा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा. एंड लास्ट सेशन जो था, लास्ट टॉपिक, जिसमें वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, एंड द मीनिंग ऑफ मास नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से. एंड इससे ही रिलेटेड दो और टर्म्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो भी हमने देखे, आइसोटोप्स and isobars. And in addition to these, I explained you an extra term, that is isotones, which is not in your syllabus but it's interesting to know about these also. Okay, so in this way we have completed ये सारे chapter के topics. तो let's see, अब ये पढ़ने के बाद are you able to answer the questions? So let us see the first question. क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है आज. ओके, तो यू कैन गिव मी द आंसर इन द चैट सेक्शन. चलो, फर्स्ट वन इज हियर. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, देन फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम. सो what is the atomic number? पहला सब क्वेश्चन है ये. कैन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है, सो आई एम राइटिंग E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई विल बी यूजिंग E. प्रोटॉन्स के लिए हम P लिखेंगे एंड न्यूट्रॉन्स के लिए वी विल बी राइटिंग N, स्मॉल n.
बट न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, सो वी नॉट राइटिंग इट राइट नाउ। तो डेटा में क्वेश्चन में ये दोनों इंफॉर्मेशन दी है, ये दो चीजें बताई। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज द फर्स्ट सब क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर कैपिटल Z, एंड बाय डेफिनेशन वी नो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। Number of protons is already given, so answer will be 8. हो गया, that's the first answer. Okay, second is what is the charge on the atom? So charge के लिए you have to say कि positive है या negative है, and अगर positive है तो कितने, 1 plus 2 plus 3 plus, okay, ऐसे हमें charge बताना है। So what do you think will be the charge on this atom जिसमें इलेक्ट्रॉन है 8 और प्रोटॉन्स भी 8 हैं? What will be the charge? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, है ना, सो दिस इज नेगेटिव, एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। सो व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन मीन? दिस मीन्स कि 8 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो व्हाट विल बी द चार्ज? सो द चार्ज विल बी 0. देयर विल बी नो चार्ज ऑन दिस एटम, यानी कि दिस एटम इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज 8 नेगेटिव चार्ज जो है, 8 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। दे आर कैंसलिंग ईच अदर, दे आर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ओके, सो दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट का आंसर चार्ज। अगर इन सम अदर केस इफ इट इज गिवन कि इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन अगर बोलेंगे 11, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, इन दिस केस कैन यू गेस कि चार्ज ऑन द एटम क्या होगा? So easily you can see here, negative charges हैं 10, positive charges 11 है, तो 10 10 अगर कैंसिल भी कर देंगे एक दूसरे को तो एक एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा बच जाएगा? एक प्रोटॉन का एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी +1। सो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, then you will write that the charge is +1, ठीक है। बट अब ये हमारा केस नहीं, और नेगेटिव का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 होते और प्रोटॉन 10 होते, देन इन दिस केस व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम? चार्ज इस केस में इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है तो इट विल बी -1, ठीक है। इज इट क्लियर? बट इन आवर क्वेश्चन दोनों का नंबर इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, एंड दैट्स व्हाई वी विल राइट दैट देयर इज नो चार्ज ऑन दिस एटम। ओके, दिस इज डन. Come on, let's do the next one. Okay, for the symbol H, D and T, tabulate 3 subatomic particles found in each of them. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज कैपिटल H, कैपिटल D एंड कैपिटल T के सिंबल्स, व्हाट डू दे मीन? तो H you know, H is hydrogen, this everyone knows. H is hydrogen. Can you tell me what are D and T used here for? जब हमने पिछला सेशन पढ़ा था isotopes का, in that we have seen this example. D and T, what are they? Capital D is used for, this is the symbol for the isotope of hydrogen, that is deuterium. And capital T, ये भी isotope है, and this is tritium. Okay. Yes, Saksham, good afternoon. So deuterium, tritium and hydrogen symbols clear हो गए H, D और T के. Okay, now after this we will have to write. Question में अभी पूछा क्या है? Tabulate the 3 subatomic particles. एक टेबल बनाना है of the 3 subatomic particles. So first of all तो H, D और T का symbol था, that we have written. Now you need to know what is this 3 subatomic particles. 3 subatomic particles means we have to make the table showing क्या? Let me know your answers in the comment section. Subatomic particles, protons, electrons and neutrons.
These are the three subatomic particles, right? Now let's make a table for each of these. So if you know hydrogen, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 1H1, D deuterium is 2D1 and tritium is 3T1. All three of them have the same atomic number लेकिन different mass number क्योंकि ये isotopes हैं of hydrogen itself. ठीक है, अब ये जो मैंने लिख दिया, आई होप यू रिमेम्बर के सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है कोई भी एलिमेंट एक्स का. यहाँ पे टॉप लेफ्ट में लिखते हैं मास नंबर और बॉटम लेफ्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट अबाउट प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें. ऐसा हमें बनाना है एक टेबल. ओके, सो यू कैन मेक द टेबल लाइक दिस क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टैबुलेट. टैबुलेट मीन्स मेक अ टेबल. ओके, थोड़ा सा I'll make and now we have to write के कौन से वाले में कितने हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो 1H1 में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे लिखेंगे, where do we have that information? See, when you know 1H1, 2D1 and 3T1, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. ये जो हमने बॉटम में लिखा है ये 1, ये क्या है एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है. दैट्स द डेफिनेशन. ऑल्सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. सो 1 1 1 सबका प्रोटॉन नंबर सेम है तो एवरीवेयर आई विल राइट प्रोटॉन इज 1. इलेक्ट्रॉन भी सब में सेम होंगे बिकॉज न्यूट्रल है तीनों, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैव टू बी इक्वल. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ विल वी फाइंड. तो फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली यू कैन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्यों, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. क्योंकि मास नंबर में आई हैव न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर में होता है प्रोटॉन्स, सो दिस विल गिव यू फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर? सो कैलकुलेट एंड टेल मी हियर न्यूट्रॉन्स. देखो डायरेक्टली हम कर लेते हैं a माइनस जेड. सो 1 माइनस 1 यहाँ पे तो हो जाएगा 0. d में 2 minus 1, this is 1, and in tritium it is 3 minus 1, that is 2. So this is the table which they wanted us to make. Okay, so you can see यहाँ पे isotopes हैं, and if you have noticed यहाँ पे ये देखो न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में there are no neutrons, there are 0 neutrons. So that's also ये क्वेश्चन आता है कि which is the only element which has no neutrons, which has 0 neutrons. So पूरे periodic table में there is only one element. जो first one है hydrogen, that only has 0 neutrons. Okay, understood. Very good section. So 0 neutrons है and बाकी जो है सेकेंड एलिमेंट हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ से सब में फिर न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं. ओनली हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट, सो रिमेंबर टू राइट दिस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, यस, क्लियर? ओके, सो शुड वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस टेबल इज कंप्लीट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू नाउ. ये देखते हैं क्या है. Okay, write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobars. Okay, so here isotope or isobar, any one pair you have to take and you have to write their electronic configuration. So you can take any isotope. If you want chlorine का ले लो, चाहिए तो hydrogen का ले लो. Okay, I'm just writing chlorine के isotopes. This is for isotopes. Okay. This first one I'm writing for isotope का pair.
एंड कैन यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for this pair of isotopes and isobars? I will write here one pair of isobars लिख लेते हैं. 40 calcium and argon we will write 40 calcium A20 and 40 argon 18. So these are what isobars, ये जो मैंने पिंक में लिखे. Okay, Bhavani Shankar, yes, good afternoon. So let's see whether you can write the configuration for these. Yes, yes, Bhavani Shankar, I am fine. Thank you for asking. How are you doing? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको मालूम है वी नीड टू नो ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है तो क्लोरीन में 17 है इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम शेल वाइज लिखें KLM, सो 17 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं. तो वी नो के फर्स्ट शेल में मैक्सिमम देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. यस, तो K में 2 हो गए, L में कितने जाएंगे? डू अ लिटिल कैलकुलेशन एंड लेट मी नो. K में 2 जाएंगे तो 17 माइनस 2 ये बच गए कितने? 15. आउट ऑफ दैट ओनली 8 कैन गो इन द L शेल. मैक्सिमम L शेल की कैपेसिटी है 8, जो हमने 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूला से फाइंड की थी सबकी कैपेसिटी, इफ यू रिमेंबर. एंड देन द रिमेनिंग वंस विल गो इन द M शेल. कितने बचे? 7. सो ये दोनों ये 35 Cl17 और 37 Cl17 both will have the same configuration क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है 17. ओके, इज इट क्लियर? रीडिंग मैथ, भवानी शंकर, आर यू रीडिंग मैथ? ओके, ठीक है. सो देन लेट्स सी इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी बिकॉज कैल्शियम इज हैविंग टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स, argon is having only 18. Okay, so if we write calcium के लिए K L M N and here K L M, तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स टोटल करने हैं. फर्स्ट शेल में जाएंगे 2, सेकेंड में जाएंगे कितने? सेकेंड कैन अकोमोडेट ओनली 8, so 8 plus 2 is 10. 20 माइनस 10 ये हो गए. अभी 10 आर रिमेनिंग. 10 हम M में डाल सकते हैं लेकिन there is a rule के last shell cannot contain more than 8 electrons. That's why we cannot put 10 here. हम सिर्फ यहाँ पे 8 डालेंगे and the remaining we will put in the fourth shell. Okay, is this configuration clear? कैसे electrons arrange होते हैं in every shell? ओके, सिमिलरली आर्गन के लिए 18 है तो 2 in the first shell, 8 in the L shell and the remaining 8 will go in the M shell. Okay, is this clear? और अभी हम K L M N ऐसे अलग अलग करके लिख रहे हैं but later on you can write directly ऐसे. For chlorine we will write 2H7. For calcium I will write 2, 8, 8, 2. Okay, Saksham, clear, very good. And for argon what can we write? 2, 8, 8 like this. ऐसे जब लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि फर्स्ट शेल, ये जो नंबर है ये फर्स्ट शेल के लिए होता है, देन सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. ओके, क्लियर? दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन. इसका आंसर हो गया. एंड लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ. सो इसको क्वेश्चन को देखो एंड try to write the answer. Okay, तो यहाँ पे bromine atom is available in the form of 2 isotopes. These are the 2 isotopes of bromine. Okay, once more I'll write here 79, bromine 35 and 49.7% is given in the bracket. सेकेंड आइसोटोप दिया है 81, bromine 35 and in the bracket it's written
50.3%. तो ब्रैकेट में जो परसेंटेज लिखा है इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परसेंटेज? ये जो परसेंटेज दिया है दैट इज द परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं ऑफ दैट एटम, ऑफ दैट आइसोटोप। दोनों आइसोटोप है ब्रोमीन के। सो इफ आई टेक अ सैंपल ऑफ ब्रोमीन, उसमें 49.7 होगा परसेंट ये वाला 79 ब्रोमीन, और 50.3 विल बी 81 वाला। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज मास वी हैव टू फाइंड ऑफ द ब्रोमीन एटम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने आपको पिछले सेशन में कराया था, वेयर आई शोड यू द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर टू फाइंड द एवरेज मास? सो द एवरेज मास विल बी, पहले वाले का ये जो मास, फॉर मास वी जस्ट नीड द मासेस। ओके, ये एटॉमिक नंबर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मासेस चाहिए। तो 79 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच परसेंटेज इज इट, वो लिखेंगे 49.7, because it's a percentage I will write upon 100. Okay, then I will write plus second वाले का मास कितना है 81 multiplied by 50.3, this is given 50.3, and because percentage है इसको भी हम लिख लेंगे upon 100. That's it. This formula you have to use, and then you have to just do the calculation. So do the calculation and let me know what answer you get. Okay, 79, इसको हम कैलकुलेशन को इजी कैसे करेंगे? 79 into decimal we will remove 497, तो अपॉन 100 पहले ही था, और ये जो डेसिमल निकाला इसका 10 नीचे आ जाएगा। राइट, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग? प्लस सेम थिंग यहाँ पे भी कर देंगे, दिस आई विल राइट upon 100 into 10. Now just multiply 497 into 79. Okay, so this multiplication I have already done, and I'll write the answer 39263. ये मिलना चाहिए 39263 upon 1000 plus ये जो second multiplication करेंगे तो we will get 40743 upon 1000. So these are a little big numbers to multiply. थोड़े से complicated working है, but इसको ऐसे ही multiply करना पड़ेगा। कोई सम्स होंगे जिसमें the figures, the numbers given will be very very easy. Okay, इससे तो ज़्यादा easy ही आएंगे. Mostly they will not ask such complicated things. But आ ही गया, then you'll have to do it like this. Okay, now denominator is already same, so I'm going to just add both these numbers, and when you add them, you will get 80,006. Okay, this is what we will get, and then इसको upon 1000 if I write, 3 decimal डालने हैं बस मुझे. So what will be the answer for this upon 1000 if I have to do? Upon 1000, the original decimal is here, तो left में 3 places जाएगा. तो my answer is 80.006 U, है ना, because we are finding the mass. So average mass of bromine atom is this one. That's the answer. Okay, got it? और यूनिट इसका मास का लिखना है U. ठीक है, क्लियर? चलो, let's do the next one. And please try these questions on your own. See the question first. उसके बाद जब आप recording देख रहे होगे तो pause the video and write your own answer and then check it. Okay, so here isotopes अपन element have. So what are isotopes? Isotopes का example simple सा अगर हम ले लें, these are the isotopes of hydrogen. ये देखो जो mass number है, mass number is different, we know one जो है नीचे ये atomic number, ये same होता है. We also know कि they are the atoms of same element, दोनों हाइड्रोजन के ही हैं.
एंड व्हाट अबाउट देयर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें ढूंढने हैं तो 1H1 में number of neutrons is how A minus Z, so 1 minus 1 0, and ये जो second वाला है 2D1 इसमें 2 minus 1 1. Okay, so here they are asking us isotopes of an element have same physical properties. नहीं, this is not true क्योंकि physical properties अलग होती हैं. They have same chemical properties. अगर होता तो वो सही होता, because chemical properties depend on the atomic number, यानी कि number of electrons in the last shell. तो लेकिन this is not true. Different chemical properties, this is also not true, because isotopes have same chemical properties. Third option is different number of neutrons. Different number of neutrons. देखो, first one we got 0 and second one we got 1 neutron. Okay, this is possible. D है different atomic numbers. Different atomic numbers तो possible है ही नहीं, because isotopes की definition में ही लिखा है कि they have the same atomic number. So what is the correct option? क्या मिला आंसर हमें? Option C is the right answer. Isotopes will have different number of neutrons. This you can check with this also. Chlorine वाले के साथ भी check कर लो. कोई भी isotope का example if you know. So you will see number of neutrons. इसमें होंगे 35 minus 17 और इसमें होंगे 37 minus 17. So it will be different only. Okay. So let's see the next one. Okay, composition of the nuclei of two atomic species X and Y are given as under. Composition of the nuclei. Nuclei is nothing but the plural for nucleus. एक का होगा atom का तो they will say nucleus, and if it's for more than one atoms then it will be nuclei. Okay. Composition of the nuclei is given, यानी कि nucleus के अंदर क्या है present वो दिया है. तो एटम X में न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, एंड इन दिस एटम Y इट इज गिवन दैट इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स. क्वेश्चन में क्या पूछा है? वी हैव टू गिव द मास नंबर्स ऑफ X एंड Y, एंड सेकेंडली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज. तो दो पार्ट में क्वेश्चंस हैं, तो वी हैव टू गिव टू आंसर्स हियर. First answer is give the mass number of X and Y. So X and Y का mass number क्या होगा? Mass number is represented with capital A, and mass number कैसे find करते हैं? Number of neutrons plus protons. So A के लिए I will do proton plus neutron, 6 plus 6, that will give me 12. So, similarly tell me Y के लिए कितना होगा mass number? Neutron plus proton we will do. So we will get 6 plus 8, that is 14. Right? So this is the answer for the first part. Mass number हो गए. Now we have to write the relation between the two species. Relation. Is there any relation between these two species X and Y? So X का symbol अगर मुझे लिखना है, I will write it as 12, उसका mass number यहाँ पे और उसका atomic number यहाँ पे. Atomic number क्या होगा? For X, atomic number is equal to number of protons, and that is 6. Similarly, if we write for Y, what will we write? यहाँ पे इसका mass number लिख लेंगे, and here we will write the atomic number. What is atomic number? Number of protons. That is again 6, equal है. So what do you think ये दोनों क्या हैं? 12x6 and 14y6. We see यहाँ पे दोनों का mass number अलग है, atomic number same है. Okay. So what is the relation between the two species? We can write that these are having the same atomic number but different mass numbers. Okay. और रिलेशन यहाँ पे दो एटॉमिक स्पीशीज बोली हैं. अगर दे आर ऑफ द सेम एलिमेंट, दोनों एटम
if the atoms are of the same element, then we can write सेम एलिमेंट के होंगे या नहीं, सेम एलिमेंट के ही होंगे बिकॉज दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है और एक एटॉमिक नंबर का एक ही एलिमेंट होता है. ओके, एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर दैट गिवन एलिमेंट, so it's very obvious that they are of the same element, so then we will call these as what? Isotopes. So these are the isotopes of each other. Okay, isotopes हैं x and y. Got it? Clear? Isotopes. Okay, let's do the next question. जल्दी जल्दी लेट्स. हाँ, यहाँ पे भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अभी अभी ब्रोमीन के लिए बताया था. So average atomic mass of a sample is given. Here average atomic mass is not to be found. It's already given. कितना दिया है? 16.2. Okay, average mass is given 16.2 units. We have to find the percentages of these two isotopes in a sample. Okay, in the sample. ये X, ये E नहीं है. Again, there's a little misprint. ठीक है. तो अगर ये दो आइसोटोप है, इनका कितना परसेंटेज होगा इन द सैंपल ऑफ X, ये ढूंढना है. परसेंटेज अबंडेंस जो ब्रोमीन वाले में ऑलरेडी दिया था परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज अननोन हियर. ओके, सो इफ आई टेक इसका परसेंटेज अगर मैं ले लूं X, तो ये दूसरा जो आइसोटोप है 18x8, इसका परसेंटेज कितना होगा? कैन वी गेस इट? कैन वी राइट इट so that we can form an equation? So because it is percentage, percentage we know is always out of 100. तो अगर ये वाला x% है तो दूसरा वाला 100 माइनस x ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का टोटल 100 होगा, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100. ठीक है, नाउ वी विल यूज आवर फॉर्मूला. एवरेज मास का फॉर्मूला क्या? So average mass will be equal to mass number, पहले वाले का mass number into उसका percentage abundance जो है unknown, plus दूसरे वाले का mass number and उसका percentage abundance जो है 100 minus x. Okay, here we have to write upon 100 because दोनों value percentage में है. ठीक है, एंड एवरेज मास यहाँ पे जो 16.2 इज ऑलरेडी गिवन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16.2. दिस इज द इक्वेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू गॉट दिस इक्वेशन. एक बार ये इक्वेशन बन गई तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड टेल मी कि x का वैल्यू कितना मिलेगा. सो ये जो डिनोमिनेटर है 100 राइट हैंड साइड में दोनों के लिए है, तो दिस वन आई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. सो आई विल गेट 16.2 multiplied by 100. So this will be equal to 16x plus 18 into 100, that is 1800 minus 18x, that is when you open this bracket. Now left hand side में 16.2 into 100, how much will this be? Decimal हम दो right में shift कर देंगे, 2 places to the right. So I will get 1620 equals 16x minus 18x. like terms हैं तो I will do subtraction and this plus 1800 you can write here और उसके बाद उसको भी left में shift कर देंगे. So I will get minus 1800. Okay, this is normal. Normal कैसे one variable की equation find करते हैं वैसे. Okay, so 1620 minus 1800. So this will give us 180 minus 180 is equal to minus 2x and minus cancels and we will get x equal to how much? 180 upon 2. That is, okay, I'll write it, 180 upon 2, that is 90. So x 90 मिला है, यानी ये जो 16x8 है इसका मुझे मिल गया है 90% अबंडेंस.
ये 90% ऑफ द सैंपल में होगा। तो ये जो दूसरा आइसोटोप है ये कितना होगा? 100 minus x, 100 minus 90, so this will be 10%. So that's a final answer. That is what was asked in the question. Okay, what are the percentages of the both the isotopes? So the percentage of the first isotope is 90% and second wala hai 10%. Okay, students, so I hope you understood all the question answers which we have done today. And then there is हाँ one more ये जल्दी से कर लेते हैं. If Z is 3, what would be the valency of the elements? Z यानी कि atomic number अगर 3 है यानी total number of electrons 3 है, what will be the configuration? 2,1. valency कितनी होगी? valency will be 1 क्योंकि ये stable होगा by donating 1 electron. And name the element. So what element has atomic number 3? So 1 to 20 atomic numbers you have to find. One is hydrogen, second is helium, third is lithium. So the name of this element is lithium. Okay, these are our two answers. One is valency and second is naam is element ka. Got it? Yeah, this was one short one. And then you have this table. So I hope you can fill this table on your own. Please try it. ये आपको टेक्स्ट में दिया है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में. So I have told you all the formulas. जो भी ये होगा atomic number is Z is equal to number of protons is equal to number of electrons, and जो mass number होता है that is equal to number of protons plus neutrons, and neutrons अगर find करने हैं तो you can do A minus Z. Okay, and name of the species के लिए 1 to 20 atomic numbers अगर by heart. नाम के लिए आपको सिर्फ ये वाला कॉलम देखना होगा atomic number का. Okay, so please try it out, and if you have any difficulty in solving this, let me know in the comment section. So thank you for watching, and don't forget to like the video and also share the link with your friends. So next class we will start with a new chapter. So take care and have a good day. Bye.